Rugal. Okay. Welcome everybody to Vaids ICS. My name is Antim Naresh, and I'm Associate Director at Vaids ICS. I take the portion of theory and some other little bit, and major portion will be taken by Vaids. Okay. Now, let me first give you a brief about the upcoming batch, and after that, I'll hand over the diet to Vaids to take your queries related to the subject and UPSC preparation. Any technical doubts that you have on joining the course or all these things, I'll be sharing. Okay? So the batch will be starting on 17th of August, and the admission for that will be on 1st of August. You have to visit our website at 8 a.m. in the morning, and you will you have to visit our website at 8 in the morning and register there. Okay? And once you have registered, you will be shared a slide process where you have to how you have to approach it. Just one. Yo. Sorry for that, some technical. To my friends who have joined online, I request you to please switch on your camera. The way the seminar is meant to be is a dialogue, and I would love to see your lovely faces. So you have to register, and the admission registration will open at 8 a.m. start. Those who are looking for offline admission, I suggest you register, try to register as early as possible, because there is there is quite a rush, I would say. Okay. About the process for offline people, once you register, you have to fill in your basic details, your name, your phone number, email address, your permanent address, etc. And you have to pay a 2,000 rupees non-refundable fee that will be adjusted as a part of your full fee payment. And once you have done that, you will get a date and time slot at which you have to visit the institute and complete the formalities. When you are coming to complete admission formalities, make sure that you bring 2 passport size photographs and a photocopy of your Aadhaar or voter or driving license, any ID proof that has government ID proof that has your address, permanent address. Okay. And you can pay fee as cash, check, and online transfer, UPI transfer. Okay. Card facility is not there, but I doubt since UPI came, people are using cards. Anyway. And people who seek admission in the online batch, for them, the entire process can be completed on the website. After you register, you get 3 days to make the remaining fee payment. About the fee, for offline batch, the fee is 59,000, and for online batch, the fee is 52,000. Okay? And now I'll just share how the batch will proceed a little. So this batch is 2 to 4 p.m. afternoon. Okay? And the classes for this will be alternate days, Tuesday, Thursday, and Saturday. Duration for the batch will be 4 months. Now, there are usually some queries regarding how answer evaluation. I'll just give you a little brief about it, and then once you join, I'll have an elaborate section on that as well. So what I usually do is I divide you guys into answer groups of 10 each. Okay? And out of those 10, usually 4 are not active. So this is a tough situation. UPSC people are not serious enough. Yet still, we have a better ratio than the journal of serious candidates. Anyway, so you will be given a list of questions in the beginning of every section by sir and by me.
And as the question gets covered in the class, you are supposed to write the answers for this. First, you share the answer among the group members and take their feedback. If you feel that the feedback is valid, make the changes accordingly. And then you will send the answers for evaluation to our counselor. Once you have received the feedback and made the necessary changes suggested by counselor, then you show the answers to the. This is being done. There is a process here. No, when you evaluate your answers yourself, you also get to see what an examiner is looking at. That helps you gain more maturity for answer writing, and the process also gets streamlined. So we make sure that no novice answers are shared to her, and we do that. For online people, the process will be same, and the discussion is done by Zoom call. Okay. So this is the process. And for online people, there are a few things I like to highlight here. First, I again request my friends joining on Zoom to please switch on your camera. So the process is that the classes for online students are live only. Okay, and the classes will be conducted on our app, Vaids ICS. The IS Lifeline is the tab that you see there. It's available for iOS and Android both. Only for mobile and tablet devices, not for those TV, smart TVs. Okay. So the classes will be live, and if due to some network issue or something, you end up missing some part of the class, then we have replay on Sunday or the 3 classes of the week, the compilation of the class. So if the class is say around 2.5 hours, the compilation will be some 1 hour 40 minutes or so. We skip the doubts and the repetitions and all those to make the repetitions crisp. And we encourage everyone, even if you have not missed the class, to attend the replay so that the concept gets embedded in your mind. And the study material for online students will get couriered, and that will happen after 1 week of the batch is complete. And pretty much this. Any queries that you have regarding the process? Anything you may ask? The people who have joined online, I request you to first raise your hand so we can avoid chaos. Any queries that you guys have sitting here in the classroom? Yeah, that will be again the replay is like the replay of your cricket match that you have. So it goes like that only, and we encourage for online and offline both students to do. For offline students, there is one more thing available, that lectures are available at institute in tablets, and you, if you feel the need, you can watch. Okay. People from Zoom, any queries if you have, you may ask. Yeah, Manas. Sir, Yeah, go on. so I am willing to join offline classes. So when are the registrations starting? And can we do offline center? First of August. I shared all the details in the beginning of the seminar, and I'll do it 2 more times. Okay, sir. So it will start on 1st of August at 8 a.m. You have to go to our website, websites.com, and register. Okay, sir. No, it's done only one. So offline, if you do it, so we need a huge manpower here with computer take care of it. In case if you are too worried, you are most welcome to visit the institute and come and register here only. Use institute Wi-Fi. And yes, I forgot to mention about the library. On first floor where you have our office, there's a big library for some 50, 70 people, and it's no, free of cost for you guys. So if there are no worries, no technical issues, I'll hand over the dash to Vatsar. Sir. Should I say good morning again? Morning, sir.
Hi, Sean. Anybody who doesn't understand Hindi, please raise your hand. Everybody knows. Chalo, ye achhi baat. Now, Antin sir told you a number of things. See, as far as anthropology is concerned, I'm responsible for your preparation. But I don't think you are in a position to ask me anything about anthropology. So how should I start? कैसे शुरू करें बताओ? There are 3 videos on updated syllabus. On YouTube channel, I think Yadav has already updated. And that will amount to about 2 hours or so. You want me to speak for 2 hours on syllabus? 3 videos on 3 different sections are there. First is for part 1, second is for part 2, and third is for paper 2. So everything has, otherwise there was a video in the beginning itself. When we started the YouTube channel, a video was there, but it was too brief. This one is quite elaborate. I think everything that you want to know, you expect to know, it is given there. Certain videos I wish that immediately after you go from here, you should watch. First is how to crack IAS. That is 17-18 minutes video. I think you can take it as a mantra. There, I've clearly said that before thinking about prelims, you should be ready with your mains. हम में से कितने लोग हैं 2024 में देने वाले? अगर मैं पूछूं क्यों देना है तो has any Jyotishi told you about or a doctor told you about if you don't appear you'll fall sick? आप दे रहे हैं 24 में क्यों? When you started your preparation? 5 months back. Be sure. Ordinarily, preparation takes about 14 to 16 months. Unless you have a background in arts. And including the type of English that you have, engineers and commerce people and doctors, very atrocious kind of language you write. So you have to learn to write as well. So it takes that much. You tell me how much attempts you need to get into the job? कितने अटेम्प्ट चाहिए होते हैं? 6 अटेम्प्ट चाहिए होते हैं. You need only 1 attempt. Then why not that attempt be your first attempt? Unless you are very sure and very true, do not think about appearing in the prelims. First attempt should be your best. But because it is first, some mistakes may be there. Some, I mean, you can't help it. So second attempt should be your last attempt. If you don't, if you think you cannot do better, why should you appear again and again? Any time when you think that you have done your best, maybe nature has the best things stored for you, better than civil services. So I always tell my students, you delay your first attempt. Nobody is going to press you for that. Actually, what happens is, like if you have started right now, if you are appearing in 24, we always advise that by 31st of January, you should be ready with your mains. Mains means at least 3 papers of GS 1, 2, 3, plus optional. Do you think you'll be ready for that? You are starting your optional in August, and you'll be finishing in November, December. And by the time, even if you have prepared GS, half of it you must have forgotten. भूल जाओगे ना? And this is the way I start. कि आपकी पूरी जनरेशन से मुझे एक शिकायत है कि जो कल पढ़ते हो आज भूल जाते हो. And if you belong to that category, अगर यूपीएससी तुम्हें भूल जाए तो फिर बुरा मत मानना. UPSC very simple rule. So first attempt should be your best. Some unforced errors can be there. You can't help it. हो जाते हैं. So second attempt should be your last. If you think you are ready for 24, you are welcome. If not, then why not to postpone your first attempt? Otherwise क्या होगा मैं तो बताता हूँ.
if you are inclined to appear in 24, obviously last 4 months you will give to your prelims. 4 नहीं तो 3 महीने दोगे. Without preparation of means, qualifying through the prelims is very, very difficult, if not impossible. So most likely you will fail in prelims. Or pass हो गए तो definitely you are going to fail in mains. So if you fail in prelims, again you will start preparation for mains. Again in 25 you will be preparing for prelims. So these 3 or 4 months that you gave for prelims in 24, in which account of your life you will mention these 3 months? And by studying these 3 months, you are endangering your 25 also. Because these 3 months you would have devoted to your mains preparation for 25. If you are targeting 25, then I would advise that by September 24, you finish with your mains. It's not difficult at all. You can. And thereafter things will be very safe. But without being thorough with the mains, see, all your friends who have appeared, and some of you also must have appeared in prelims this time also. With prelims preparation, you can attempt only 30 to 35 questions, not more than that. I doubt if you appeared and scored more than 70. If you are worried about prelims only, even if you prepared prelims for 1 year. And if you are thorough with the mains, another 15 to 20 questions you can. Many reason assertions questions and that series 1 and 2 and 1 and 3 and all those things. So you are on the verge of qualifying. But if you don't, you fail in prelims, thereafter you will keep preparing for prelims only. क्या prelims तो पास हो नहीं रहा, मेंस की तैयारी करके क्या करेंगे? बिना मेंस की तैयारी के prelims होगा नहीं. Then ultimately you will finish your chances and then you will blame your luck. इसमें luck कहाँ से आई? This is strategic fault. So once you have thought of facing UPSC, make a strategy, a foolproof strategy. ठीक है? ठीक है, you keep on troubling me for 6 years. I don't mind क्योंकि मैंने तो फीस ली है तो मेरी responsibility बन जाती है. You can continue till the time you want. You can repeat test series. You can repeat your classes. You can repeat answer writing also. But why not to do it maximum 2 attempts? और फिर एक चीज और जो है, I mean other institutes they are imitating, like they started with free library. Like they started repeat classes or repeat test series also. And some of them have started even prize also. We have it from the beginning. We used to give return fee for the people who got into IAS in general category. Last year onwards, we have started up to IAS, IPS and IFS also. If you are within the IAS, IPS, IFS cutoff of general category, full fee return is there, including GST and every tax. Of course, reward is there, some silver gift is there. But you know, I'm a bit clever at the same time. I have kept a condition that if you are joining us, if you are in the job, 1 month's salary you have to give it to me anytime I demand. And I have given the reason also. I'm going to start a school for tribals. And all savings I have already invested and I'll be needing much more money. And if you do it, आप एहसान नहीं कर रहे हैं. Whatever you have gained from the society, if you give a part of it to the society, तो क्या जाता है भाई? फीस का हिस्सा नहीं, आप नहीं भी देंगे तो कोई बुरी बात नहीं है. बट बीइंग ह्यूमन, अदर्स आल्सो डिजर्व कि आप ही कुछ करें उनके लिए. इंडिविजुअली यू मे बी डूइंग, बट कलेक्टिवली आल्सो यू मस्ट. ठीक है कि नहीं? तो आप 59,000 देंगे, 59,000 आपको वापस हो जाएंगे. जब आपकी सैलरी 2 लाख होगी, मैं कहूंगा 1 महीने की सैलरी दो. मेरा तो उसमें भी फायदा है. But honestly, jokes apart, when you have thought about UPSC is very easy. People say unpredictable public service commission. What do you need? First is language. I told you most of you are very poor in language. UPSC 8 सालों के लिए बनी थी, डॉक्टर्स के लिए थोड़ी बनी थी, कोई इंजीनियर्स के लिए थोड़ी बनी थी. You have specialized services, you go there. But most of the people who succeed are from this background. So if you have good command,
You need clarity of concepts and definitions for everything. Then you need logic, argument to support the concept or oppose the concept, whatever arguments you have in favor or against. Then in support of your argument, evidences, that can be examples, that can be case studies, that can be pie diagrams, any type of bar diagrams. And you need to conclude whatever you have done. इतनी सी बात के लिए आप लोग 6 साल लगा देते हो. The reason is UPSC is very dicey in a sense that if you seek advice of one person, it may be okay. But if you seek advice from 10 persons, you may get 11 types of advice. By the time you reach 10th person, the first person has already changed his opinion. That's why you may consult n number of people, but then you devise a strategy. Then you don't, वो कहता है ना, सलमान खान कहता है ना, फिर या अक्षय कुमार कहता है, फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता करके, किसी फिल्म में कहता है वो. But then if you think that you are going wrong, at every step you must evaluate yourself also, that whether you are wrong or right. But one thing is there, optional is one thing. These days, if you see, it is only optional and essay that matter. GS में तो you count the top person and the bottom 1000 person, दोनों में 50 marks का difference भी नहीं होता total. And that means you can cover even in essay or even in optional. But it doesn't mean that you should ignore general studies. If you look at the history of civil services up to 2001, 2002, people used to score 450 out of 1000. Now they don't even out of 600. क्यों नहीं करते? Main reason is coaching. कितने लोगों ने कोचिंग ली है जीएस की? ऑनलाइन ऑफलाइन सारे? कहाँ की है? क्यों? आइडिया नहीं था. अभी परसों ही मैंने एक वीडियो बनाई है ना टेस्ट सीरीज के ऊपर, देखिए. फिर वो गाइडेंस वाइडेंस कुछ नहीं होती, ये मार्केट है भाई. मैंने उस वीडियो में कहा है कि एट 21 यू आर रेडी टू रन द कंट्री, क्योंकि वोट डालते हो सरकार के लिए. यू कैन नॉट डिसाइड अबाउट योर करियर. ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उसमें एक चीज और कही है कि आप सब्जी खरीदने जाते हो तो आप 6 जगह देखते हो, देन 7th प्लेस यू बाय. लेकिन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना होता है, यू नेवर गिव ए सेकंड थॉट. ऑनलाइन देख लिया, अरे जाके विजिट करने में क्या जाता है भाई. इंस्टीट्यूट में क्या होता है, यहाँ बैठे हैं काउंसलर्स, पीछे टॉपर्स की फोटो लगी है, यू गेट इम्प्रेस. आप कहीं भी जाओ, फोटो मत देखना, नीचे देखना डेट एंड प्लेस एप्लीकेशन फॉर्म का. वो डेट एंड प्लेस वही होगा जो इंटरव्यू का होता है. एंड इंटरव्यू के लिए दे कैन डू नथिंग, दे इवन डोंट नो व्हाट इज पर्सनालिटी एंड हाउ टू इंप्रूव पर्सनालिटी. और वैसे भी विद इन ए वीक पर्सनालिटी चेंज नहीं होती, इसलिए मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट वो फ्री करते हैं पर्सनालिटी. और जब फ्री ले रहे हैं तो फिर इसका आप उनके स्टूडेंट नहीं हो. विदाउट चार्जिंग एनीथिंग हाउ कैन दे क्लेम, बट दे क्लेम. और फिर वो एथिक्स भी टीच करते हैं साथ में. मुझे नहीं पता कितना एथिकल है ये, बट इट इज. अंतिम सर साइड इट इज डायलॉग, इज नॉट मोनोलॉग. तो क्लास में तो मोनोलॉग होता ही रहेगा, आप लोग पूछो जो पूछना. सर जी आप इतना पीछे क्यों बैठे हो, 2 बेंच और भी हैं खाली, आगे आ जाओ. Guys, please move in front and center. ये ऑनलाइन बच्चों का क्या चेहरा अच्छा नहीं है या मुझे दिखाना नहीं चाहते हैं? ऋषभ, शिवानी, दिव्या, कुणाल, चिन्मय, पार्थ, क्या करते हो यार? इतने सुंदर सुंदर चेहरे हैं. रिजल्ट आने के बाद फोटो जाएगी तो कितना अच्छा लगेगा. फुल पेज पे कुछ इंस्टीट्यूट तो डालते हैं. आस्क एनीथिंग यू वांट, मेरी पर्सनल लाइफ छोड़ के. You can ask anything from UPSC to international relations. नहीं पूछना. We have a tradition that we should not speak in front of our elders. है ना? You are following that tradition. So, Yes, sir. बोलो. sir, am I audible? हाँ अर्चिता बोलो.
सर वो क्लास अगस्त वाले बैच की कब से शुरू होगी? कल शुरू कर देते हैं, ये तो सर ने बताया ना अभी। See, actually, we have announced just one thing that is important. We have announced on 17th. लेकिन एक अच्छी बात है और खराब बात भी है एक ही. We have a world conference in Bhubaneswar from 9 to 14th August. And because I'll be there, I'll be in the tribal belt, so I thought that I must visit some tribal schools also. अभी मैंने आपको बताया कि I'm going to start international school. तो मैं चाहता हूँ कि कोई कमी ना रह जाए. It should be foolproof. लोग ट्राइबल सोचते हैं तो इग्नोर कर देते हैं, बट आई वांट टू क्रिएट नेशन बिल्डर्स इन दैट स्कूल. So I want to visit some tribal schools also. So in 17th is Thursday. We'll be starting on Tuesday. I think that will be 21st or 22nd. It was announced on 17th. I asked Antin sir that we can prepone 2 or 3 classes before 9th because I have to leave by 8. But sir ने कहा कि नहीं, उसको आगे बढ़ा दो. So most likely on Tuesday, whatever next Tuesday is there, I think it is 22nd. So we'll be starting our class on 22nd. और वो जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होगी उसमें जो कुछ भी लेटेस्ट आएगा वो आप लोगों को तो फायदा करेगा ही करेगा. पर एक आप लोगों में खराब बात क्या है कि जो भी हम लेटेस्ट करते हैं यू शेयर इन योर पीयर ग्रुप, तो वो कॉमन हो जाती है बात. और एक खराब बात और भी है कि जो भी टॉपर्स होते हैं सिर्फ एंथ्रो में, दे पुट ऑल देयर नोट्स एंड बुक्स ऑन यूट्यूब और वेबसाइट. तो सारे अक्षत हुआ, अमित नारायण हुआ, सचिन, सारे स्टूडेंट्स हम जितना भी हम उनको अपडेट करते हैं वो सारे डाल देते हैं उसमें, वो पब्लिक हो जाते हैं. सो एवरी टाइम वी हैव टू चेंज अवर स्ट्रेटेजी. भुवनेश्वर से है कोई आप में से? निशांत बाद में, पहले कोई है भुवनेश्वर में? I'll be there from 9 to 14th, and thereafter I'll be visiting surrounding areas up to Raigad, some tribal schools. हाँ निशांत बोलो. So I was planning on joining the September batch. So I just wanted to ask in the meantime, is there any? सितंबर में कहाँ है बैच? Sir, website पे लिखा हुआ था कि सितंबर में भी एक batch. अक्टूबर में होगा सर, एवरी अल्टरनेट मंथ होता है. Okay, so is it possible that we can prepare using some resources in the meantime to extract the maximum out of classes? जब भी next सर class. आप तब भी एंथ्रो पढ़ेंगे, अब भी एंथ्रो पढ़ेंगे, तो जीएस कब पढ़ेंगे ये बताओ. Those 4 months you have to devote fully to general study to anthropology, and within that you have to write about 160 to 180 answers collectively as a group. Antim sir will tell you, and you have to get them evaluated. मैं बहुत सनकी हूँ, मैं बड़ी आसानी से सही नहीं कहता आंसर को, बट वंस आई से दिस आंसर इज ओके, इट मीन्स इट इज वर्थ एटलीस्ट 60% मार्क्स. तो अगर मैंने कह दिया तो फिर उसको रट लो. इस बार आई इंटरेक्टेड विद मोर देन 40 स्टूडेंट्स ऑफ माइन हु फेल्ड इन मेंस. सबसे पूछा व्हाट आर द रीजन. कॉमन रीजन था सर टाइमली रिवीजन नहीं हो पाए. When I tell you that you should be ready with your mains before you think about prelims, तो रिवीजन के लिए टाइम कहाँ चाहिए भाई. मेरी एक शिकायत और भी है, आप लोग मेरी बिल्कुल नहीं सुनते, मोदी भी नहीं सुनता, देश का हाल इसीलिए इतना खराब है. आप लोगों का कैरियर भी इसीलिए इतना खराब है. सुन लिया करो, बुजुर्गों का कहा और आंवले का खाया बाद में पता लगता है. डन. सर एक चीज ध्यान में रखना, ज्यादा पढ़ने से ज्यादा बड़ा अफसर नहीं बनता. UPSC has clear guidelines for you on what lines you have to prepare and you have to prepare. मैंने अभी आपको बताया क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट वगैरह. अगर नहीं समझ आया तो फिर से वीडियो अपलोड होगी तो देख लेना. क्लैरिटी चाहिए हर मामले में, एक्सप्रेशन चाहिए, खास तौर से विजन चाहिए. ऐसे में जो थीमेटिक ऐसे होते हैं उसमें एक सोच चाहिए. और आयरनी ये है कि आप लोगों ने कोर्स की किताबें भी ढंग से नहीं पढ़ी होती तो सोच कहाँ से डेवलप होगी. Guys sitting in the classroom, if you have any queries, you may ask. ये तो क्लास में भी पूछ लेंगे. पूछ लो. CSET? Is it CSET?
is called civil services aptitude test. Do you really judge aptitude for civil services in that? एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, you know, it was compulsory in the beginning. हम 8 लोग गए थे दिल्ली हाई कोर्ट अगेंस्ट कंपल्शन, अगेंस्ट यूपीएससी, एंड वी हैड वेरी स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स. यूपीएससी कहती है इंग्लिश इज कंपल्सरी, इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. We proved that only in 12 countries English is spoken, and no country has grown through a foreign language. You talk about Japan, you talk about Russia, you talk about France and any other country. Then they said, but its knowledge is a must. Then we argued, फॉरेन सर्विस वालों को मसूरी में आप एक लैंग्वेज पढ़ाते हो, एक और पढ़ा दो भाई. तो कहते हैं इट्स ओनली मैट्रिक स्टैंडर्ड. In half of the country, English is not there even up to graduate level. तो मैट्रिक स्टैंडर्ड भी क्या करेगा? फिर वो कहते हैं वी हैव कंसल्टेड टॉप एक्सपर्ट्स इन यूपीएससी. तो कोर्ट ने कहा आपको ये एक्सपर्ट नजर नहीं आए थे, इनसे भी पूछ लेते पहले. तो अंडर दैट प्रेशर दे चेंज स्ट्रेटजी, उसको क्वालिफाइंग कर दिया. कभी भी ऑब्जेक्टिव, आई वाज द ओनली वन टू क्रिटिसाइज एट दैट टाइम, कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप के बेस पे क्वालिफाइंग पर्सनालिटी टेस्ट नहीं होती और एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होता. जो एप्टीट्यूड टेस्ट के जो क्वेश्चन थे डिसीजन मेकिंग के 4 क्वेश्चन, वो तो हटा ही दिए गए, उससे एप्टीट्यूड टेस्ट होता था. उसके लिए तो लास्ट 4 months 1 hour डेली आप करो. देखो अगर आप आज भी सी सेट करने लगोगे, यू विल हैव टू कंटिन्यू प्रैक्टिस टिल योर प्रीलिम्स. बीच में छोड़ दोगे फिर भूल जाओगे. तो लास्ट 4 months जो हैं वो 1 hour डेली अगर आप देते हैं तो दैट्स एनफ. और पैसे भी 27 क्वेश्चन तो आपने करेक्ट करने हैं ना. आप मैक्सिमम 40 करो. लोग 60 करते हैं, फिर गलत हो जाते हैं, फिर बाहर हो जाते हैं. बैठ, नहीं बैठ. हमारे यहाँ तो जब क्लास में होता है ना, मैंने विश गुड मॉर्निंग, किसी को खड़ा भी नहीं होना होता. जो बच्चा खड़ा होता है ना उसको मैं कहता हूँ कि तुम 70 बार 80 बार इकट्ठा ही उठक बैठक कर लो. क्योंकि एक तो एंट्री गलत तरीके से है. अगर फ्रंट से एंट्री होती ना then would have been okay. But otherwise also, I want that I should get up from my seat when you come to me, not the other way around. मेरा मानना यह है कि जो रिस्पेक्ट होती है वो आंखों में होती है, वो बॉडी लैंग्वेज में होती है. तो ये जेस्चर जरूरी नहीं है. हाँ पूछो. मैं फिर कहूँगा ठीक है कई बार कर दो, फिर बोलो. मिलना. See one thing, let me tell you. Who are these engineers, the IIT people? They entered IIT through a siphoning process, filtering process. Means otherwise also they are above average. You don't have such siphoning process in arts. More than 75% people who appear in civil services, they are engineering graduates or doctors. Other way around, who takes up arts? You know, our conventional, if you look at our society, if parents have good salary, बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा. बच्चा पढ़ने में तेज है तो बच्चा साइंस पढ़ेगा. तो आर्ट्स वाले का क्या हुआ फिर? Those who go for arts, only 5% are genuinely interested in arts. Either they want to go into journalism or they want to go into academics. बाकियों की तो मजबूरी होती है. आर्ट्स में कितना पढ़ते हो भाई? क्या सब्जेक्ट है आर्ट्स में बताओ, पूछो. भाई आर्ट्स वालों के पास तो इतना टाइम होता है. मतलब हम जब तुम्हारी उम्र के थे या उससे छोटे थे तो बाजार से मूंगफली ली तो जो लिफाफा है वो लिफाफा भी पड़ जाते थे हम लोग. आप लोग बाजार में जाते हो, हम लोगों के यहाँ हमारी जनरेशन में व्हेन समथिंग न्यू वुड कम एवरीबॉडी वुड पिक अप. यार नई चीज है, देखें क्या है. आप लोग बाजार में जाते हो, देखते हो, ओहो यार एक और चीज आ गई, छोड़ो यार हटाओ. यूपीएससी आर्ट्स वालों के लिए ही बना है यार.
लेकिन वो इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को मेहनत करने की आदत डाली जाती है शुरू से। होता क्या है कि एक इंजीनियर जो है आईआईटी का, वो 6 घंटे पढ़ेगा ना, फिर देखेगा यार ये 15 पेज बचे हैं, इसको फिनिश कर दूं, फिर उठता हूँ। एक आर्ट्स वाला बंदा है, 2 घंटे पढ़ेगा ना, या थक गया अब, थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा। ये फर्क आ जाता है, ठीक है ना। आप जितना मर्जी घंटे पढ़िए, वट एवर यू रीड यू शुड रिमेम्बर। आप कम पढ़िए, बट वट एवर यू रीड, बाय द टाइम यू गो टू बेड यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस कि सब कुछ मेरे दिमाग में आ गया। आप लोग क्या करते हो, हाँ जी पढ़ लिया है जी, बाकी रिवीजन बाकी है, मतलब आपको कुछ नहीं आता। देयर इज नथिंग इन सोशल साइंसेज दैट यू कैन नॉट रीड एंड अंडरस्टैंड योरसेल्फ। तो पढ़ के कौन सा तीर मार लिया? यूपीएससी इज नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट हैव यू रेड, what you will perform in those 3 hours will be what is there in inside you. कई लोग देखते हैं, हाँ जी सर बस 6 रिवीजन हो गई। अरे 6 क्यों हो गई यार, एक काफी नहीं है क्या? Today in general studies, videos are available on every topic, and by listening it is easy to remember. आपने वीडियो देखा, कन्वर्ट इनटू पॉइंट्स, एडिशनल सोर्सेज देखो, कन्वर्ट इनटू पॉइंट्स एंड मग अप, सिंपल। मेमोरी बेस्ड एग्जाम है, बाकी आपका दिमाग है, जो भी एनालिसिस आपको करना है और आपकी स्किल, राइटिंग स्किल जो है, लेकिन मेमोरी इज द फर्स्ट थिंग दैट हैज टू बी देयर। अभी यहाँ से अग्रवाल सीट से वाजीराम तक जाओगे तो आपको 1000 लोग मिलेंगे। कई लोग मिलेंगे, हाँ साहब 5-6 बार रिवीजन हो चुका। अरे 5-6 बार रिवीजन क्या होता है यार? आता क्या ये बताओ। मैं हमेशा, कोई भी आता है, मैं पूछता हूँ 2 थिंग्स, एक तुमने पढ़ा क्या है, एक तुम्हें आता क्या है। मैं नहीं पूछ रहा पढ़ा क्या है, मेरे को ये बताओ आता क्या है। और 95% लोग होते हैं जिनको नहीं आता होता, तो फायदा क्या है? ठीक है, एक बार वीडियो सुनो, 2 बार सुन लो भाई, द मोर यू लिसन। कई बार तो लैंग्वेज भी अडॉप्ट कर लेते हो आप वीडियो। दैट्स व्हाई वी हैव रिवीजन क्लास ऑन संडे। 3 क्लासेस होंगी संडे को रिवाइज करके। आप में से कई लोग होते हैं यार समझ में आ गया, अब क्या जरूरत है। नो, यू मस्ट वॉच। आप दूसरी बार सुनते हैं तो यू डेवलप ए डिफरेंट टाइप ऑफ विजन। So there's a question from Zoom, Jena. जैना, हाँ हेलो सर। तुम तो उड़ीसा से हो। हाँ लेकिन दिल्ली में रहता हूँ मैं, इसलिए बोला नहीं भुवनेश्वर से हूँ। या ये तो गलत बात है। हाँ बोलो। सर ये जो 4 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, तो ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं आप, या खुद कुछ करना होता है खुद? ठीक है, मैं देखो, मैं तुम्हें बड़ी एक गलतफहमी दूर कर दूं। मेरे को पढ़ाना नहीं आता। आई टेल यू वेरी फ्रेंकली, मैं मोस्टली कहता हूँ, आई एम प्राउड, आई एम द ओनली कोच इन दिस कोचिंग वर्ल्ड। आई एम नॉट ए टीचर। हम्म। टीचर आपको जीएस में मिलते हैं जो 25 पेज लिखवा देते हैं, यू आर वेरी हैप्पी, सर ने इतना लिखवा दिया आज। वो सारा कुछ तो है ही। कोच का क्या रोल होता है, लाइक मैंने वीडियो में भी कहा था, आप हॉकी खेल रहे हो, नेशनल लेवल खेल रहे हो, वाइल यू एंटर डी, वो आपने हिट कहाँ मारना है ये कोच नहीं बताएगा। कोच तो सीधा नकल पे मारेगा हॉकी, एंड दैट इज माय जॉब। यस सर। सो सर यू विल है ना, गाइड। वो शाहरुख ने पिक्चर बनाई थी ना, मैं हूं ना, मैंने ही उसको सजेस्ट किया था नाम। हम्म, यस सर। सर सो यू विल गाइड द सोर्सेज, एंड उसके बाद वी विल स्टडी अबाउट इट, मतलब बाकी पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। पूरा सिलेबस आप लोग कंप्लीट करेंगे। आप लोग आंसर ही बताओ, समथिंग अराउंड 180 आंसर्स यू पीपल हैव टू राइट एंड गेट इवैल्यूएटेड, and then there'll be test series also, another say 20-30 new questions will be there. Then after you qualify through the prelims, there is a time bound answer writing program twice a week. यस सर। ठीक सर है और ना। तुम लोग आना बंद कर दोगे तो मैं बोर नहीं हो जाऊंगा फिर। यस सर। हाँ ये सर। सही है, कहते कि और बच्चे आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल। बोलो। सर अगस्त 18 से अगस्त 22 से क्लास शुरू होने वाली है, तो ये अभी से अगस्त 22 तक कोई स्टैंडर्ड बुक रेफर करना चाहिए हमें? Yeah, there is one book we always remember, that is by Amber and Amber, EMBER. यस। Actually, there are 3 writers, Amber, and Peregrine, but popularly it is called Amber and Amber. 15th edition जो है मार्केट में भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी है। यस। मोटी किताब है, बट इट क्लियर्स ऑल द बेसिक्स।
26 चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर रोज अगर पढ़ते हो, नहीं भी पढ़ोगे तो फिर वट एवर रेलिवेंट मोस्ट क्रूशियल चैप्टर्स आर देयर, 6 या 7 चैप्टर हैं विच फॉर्म एन इसेंशियल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। बाय द टाइम यू ज्वाइन वो आपको जो है बता दिया जाता है कि ये चैप्टर पढ़ लेना। ठीक है सर, थैंक यू सर। अगर तुम ही लोग पढ़ोगे तो मैं क्या करूंगा यार? तुम्हारा काम है मैं जो कहता रहूं वो करते रहो। There also raised his hand but lowered it. Mohammed Uzair. उजैर जी सर। बोलो। सर आपसे ये पहले पूछना तो था नाम कि का मीनिंग बताओ। सर इट इज बेस्ड ऑन अ प्रॉफिट। एक प्रॉफिट थे जिनका नाम ये था। और तुम खुद मोहम्मद भी लिखा हुआ है, प्रॉफिट फिर डबल प्रॉफिट। जी सर। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन ये था कि मैंने कुछ कुछ वीडियोस देखी जिसमें अभी आपने भी रेफर किया कि याद बहुत सारी चीजें करनी है एंथ्रोपोलॉजी में, बल्कि जीएस में भी कई जगहों पर। नहीं, इस यूपीएससी इज नॉट एंथ्रोपोलॉजी। हम्म। यूपीएससी एज ए होल, इवन इन जनरल स्टडीज, अगर आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, इफ यू राइट थिंकिंग एंड राइटिंग, यू कैन नॉट अटेम्प्ट 3.5 क्वेश्चन। फैक्ट्स हैव टू बी नोन बाय हार्ट। लेकिन वर्ड बाय वर्ड एंथ्रोपोलॉजी में बहुत ज्यादा याद करना पड़ता है। थीम उसका जो है, लॉजिक उसका, एग्जाम्पल तो रटने ही पड़ेंगे भाई, उसका कोई चारा नहीं। डायग्राम वैसे ही समझ में आती हैं तो अपने आप ही आ जाती हैं। ठीक है। अच्छा। अगर पैरा है तो उसको आप पॉइंट्स में यू कैन रिमेंबर, यू कैन इलेबोरेट लेटर ऑन, यू कैन हैव योर ओन मैकेनिज्म। ठीक है ना। मान लो जीएस में किसी आंसर में यू हैव टू राइट 15 पॉइंट्स, अगर 8-10 पॉइंट तुम्हें याद नहीं होंगे तो 15 कैसे लिखोगे? You will utilize another 2-3 minutes for a question that you have to write in 7 minutes. So you will be suffering at some other question. राइट सर। ठीक है। पूरा यूपीएससी ही याद रखने का खेल है। राइट। और सर जिसकी ड्राइंग स्किल्स बहुत ज्यादा बुरी है उसके लिए एंथ्रो कैसा है? कहाँ गया? नजर आ रही है? You know, I literally hated drawing. Let me tell you. इतना हेट था कि 8th में वी हैड ऑप्शन कि संस्कृत लें या ड्राइंग लें। आई चोज संस्कृत। वो अलग बात है कि मैं संस्कृत सीख के बड़ा फायदा हुआ मुझे, लेकिन जब मैंने व्हेन आई जॉइंड एंथ्रो बीएससी फर्स्ट ईयर, हाँ यस्टरडे आई कंप्लीटेड 51 इयर्स इन एंथ्रोपॉलजी एज ए स्टूडेंट एंड एज ए टीचर। 15 जुलाई को 10 बजे मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के एंथ्रो डिपार्टमेंट में एंटर किया था। तो आई लिटरली हेटेड, बट जब पता लगा कि इट इज एन एसेंशियल इंटीग्रल पार्ट, फिर आई स्टार्टेड ड्राइंग ऑन सैंड फर्स्ट एंड थ्रू दैट आई डेवलप्ड इंटरेस्ट। आप कहो तो मैं तुम्हारी स्कल भी ड्रॉ कर दूं। मैंने एक शॉर्ट भी बनाया हुआ है ड्राइंग के ऊपर, हाउ टू ड्रॉ डायग्राम्स के ऊपर, वो देख लेना उसको। जी सर। बड़ा आसान होता है यार। एंड सी, इफ यू आर वरीड अबाउट डिफिकल्टीज, देन आई थिंक फॉरगेट अबाउट यूपीएससी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यूपीएससी है, बाकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। ठीक है। और अगर मेरे रहते हुए भी एंथ्रो में प्रॉब्लम रह गई तो मेरे होने का तो फिर कोई मतलब ही नहीं होता फिर। अभी वो जो वीडियो मैंने बनाई है, एक बंदे ने कमेंट किया है कि 59,000 तो फीस लेता हूँ और बड़ी बड़ी बातें करता हूँ। फीस 59,000 है, पता है आपको? आधी तो टैक्स में चली जाती है, पता है? 30% इनकम टैक्स चला जाता है, 18% जीएसटी चला जाता है। और बाकी जो है, ये जो आपको जो फ्री लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ है, मैं सारा हिसाब लगाने लगूं तो जितने पैसे बचते हैं उतनी तो मेरी चैरिटी भी हो जाती है। 200-300 फैमिली जो हैं जो डिपेंडेंट है मेरे ऊपर, जैसे मैं तुम लोगों की जिम्मेदारी लेता हूं तो मैंने उनकी भी जिम्मेदारी ले रखी है। एक चीज डिसाइड करो, वंस यू ज्वाइन फॉर एवर। अभी सहाय सर जो आए थे उन्होंने कहा था यहाँ पे कि आप एंथ्रो में एंटर तो कर सकते हैं, उसके बाद आप चाहे छोड़ दो एंथ्रो को, एंथ्रो आपको छोड़ती नहीं है फिर। द स्टूडेंट्स हु आर देयर इन ब्यूरोक्रेसी, आई इंटरेक्ट विद देम एंड आई रियलाइज, मैं उनसे बात करता हूँ तो पता लगता है कि हाउ दे यूज एंथ्रोपॉलजी इन ब्यूरोक्रेसी।
Jyotsna, you were asking something? ज्योत्सना का है? यस सर, गुड आफ्टरनून सर। अच्छा, गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा भी वही क्वेश्चन था। ड्राइंग एक्चुअली मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और इंटरेस्ट भी नहीं है ड्राइंग में इतना ज़्यादा, बट ड्राइंग का काफ़ी मेजर रोल रहता है एंथ्रोपोलॉजी में, तो वही थोड़ा सा एक फियर फैक्टर था। Drawing. Same question. ड्राइंग मैंने जी पिछले सर। सेमिनार में भी किसी ने कहा था, मैंने बनाई थी ड्राइंग बोर्ड पे, फिर से बनाऊं? नहीं सर, नहीं, एक्चुअली मैं ये बोल रही थी कि मेरी ड्राइंग में इंटरेस्ट भी नहीं है और काफ़ी ख़राब भी है, और एंथ्रोपोलॉजी में काफ़ी मेन फैक्टर रहता है, तो एक ये थोड़ा फियर फैक्टर था कि ये। पहले तो ये बताओ कि तुम्हें कहा किसने है आईएएस देने के लिए? माँ के हाथ की रोटियां अच्छी नहीं लगती गरम गरम खाती हुई? जब ओखली में सिर देना ही है, आई टोल्ड यू, प्रॉब्लम तो यूपीएससी है, बाकी सारी प्रॉब्लम तो ठीक हो जाएंगी। ठीक है? व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग यू रियलाइज दैट यू डू बेटर देन अदर्स। एक ब्लॉक होता है मेंटल में कि मुझसे नहीं होगा, निकालो बाहर उसको, अपने आप होता है। बाबा रामदेव कहते हैं ना, करने से ही होता है, जी सर, वैसे ही। थैंक यू सर। There is a very popular question that has been going around. Your views on Prelims 2023 as on YouTube. माय व्यूज ऑन प्रीलिम 2023। या एक चीज ध्यान में रखो, प्रीलिम्स इज ऑलवेज लाइक दैट समवट। द रीजन इज यूपीएससी नेवर वांट्स यू टू बी ए मास्टर इन प्रीलिम्स। आपने 23 का प्रीलिम्स देखा है तो आपको लग रहा है इट इज लाइक दैट, आप 24 का देखोगे तब भी आपको लगेगा इट इज लाइक दैट। ऑलवेज दे क्रिएट वेरिएशंस। अच्छी बात यह है, ऑल दोज वेरिएशंस आर कॉमन फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। वो किसी को सपोर्ट तो नहीं कर रही ना भाई, तो ऑलवेज दे विल डू लाइक दैट। ये देखो कि हर बार कट ऑफ जो है वो 82, 83, 84 ही क्यों रहता है? दिस इज बिकॉज एवरी टाइम दे मेक न्यू चेंजेस। मेंस में तो वो कुछ कर नहीं सकते, सिलेबस डेफिनेट है। प्रीलिम्स में दे कैन आस्क यू एनीथिंग अंडर द स्काई एंड दे डू, so they keep changing the pattern. There is nothing new about 23, rather every time new is there. But I told you कि आपने prelims के बेस पे you can score only 35 to 30 to 35 क्वेश्चन, 60 to 70 स्कोर हो सकता है। मैंने बताया तो शुरू में, आप कितनी भी मेहनत कर लो प्रीलिम्स का, इफ यू आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर प्रीलिम्स यू कैन नॉट स्कोर मोर देन 70। From Saurabh Sharma. सौरभ, Sir, do we need to learn many thinkers and their name and their ideas? मैनी मीन्स मैनी की कोई लिमिट है? डू वी नीड टू रिमेम्बर मैनी थिंकर्स? ये मैनी क्या फिगर होती है मेरे को बताओ पहले। See, as far as optional is concerned, you are not a master. You have to substantiate through somebody else's thought. And if you are explaining to somebody, obviously you have to mention it, the name of the person and the year in which it was published to authenticate your answer. Otherwise, that becomes a newspaper article. Generally, in an answer, 2, 3, 4 authors may be there, not thinkers. Thinkers का chapter अलग है, but कुछ thinkers ऐसे हैं, thought ऐसे हैं that you can use in other sections also, in paper 2 in particular. वो जब हम लोग करेंगे तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। थिंकर्स नहीं डालने होते हैं, ऑथर्स के व्यूज डालने होते हैं। नहीं तो अपने आप अगर करोगे तो फिर कैसे होगा? फिर उस तरह से होगा। बचपन में एक कविता सुनी थी, गत वर्ष भूगोल में आया गोल है कैसे धरा, और हमने एक पल में लिख दिया उत्तर खरा। गोलगप्पा गोल है, मूवी हमारा गोल है, इसलिए मास्टर जी ये धरा भी गोल। झूम उठे मास्टर जी इस अनोखे ज्ञान से, और पर्चे पर उन्होंने लिख दिया ये शान से, ठीक है बेटा हमारी लेखनी भी ठीक है, गोल है दवात इसलिए नंबर भी तेरा गोल। इस तरह का आंसर हो जाएगा फिर। और कुछ पूछना तो ये सर, एक मिनट। हमारे यहाँ स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल रहेंगे, फिर बेसिक रेफरेंस बुक्स अवेलेबल है, उसके बाद हमारा कुछ क्लास टूल्स भी रहेंगे।
तो मतलब हमारा अप्रोच किस तरह से है, सर जोड़ी में? आपको समझना है और आंसर लिखना, ठीक है। एक्चुअली इंटरेस्टिंगली यूपीएससी डज नॉट वांट यू टू नो टू मच। हो क्या रहा है कि आप लोग, या जब कोई एक इशू है, मान लो आपको जो किताब है, जो मेरी किताब है, वी स्टार्ट विद दैट इन सर्च ऑफ आवरसेल्व्स एन इंट्रोडक्शन टू सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, उसका चैप्टर 4 से हम लोग शुरू करते हैं, मैरिज से। तो मान लो एक हेडिंग में देर आर गिवन 2000 वर्ड्स, यू हैव टू राइट से अबाउट 200 वर्ड्स, आई डिक्टेट टू यू 220 और 230। उसमें जो कुछ ऐड डिलीट करके जो कुछ करना है, कितना पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। पहले मैंने 15 मिनट में आपको समझा दिया, फिर मैंने आपको अगर 230 वर्ड्स कर दिए, है ना, उतना ही करना पड़ता है। पर आप लोग करते क्या हो, अच्छा ये चैप्टर है, पहले 4 सोर्सेज पढ़ लो, और 4 सोर्सेज पढ़ लो, फिर उसको लिखने लगो, फिर पता लगा कि 200 लिखने थे, 500 हो रहे हैं ये तो। फिर डिलीट क्या करो, क्लास नोट से डिलीट कर देते हो फिर तुम लोग। Actually, to score, there are two things. Either you write more than what others do, or you write different from what others do. You cannot write more because of your speed and because that space is limited. You can write differently. And class differentiates your answer from others. तो जब आप लिखते हो तो मैं कहता हूँ you write your answer and then compare with Akshat or Shreyansh or Sachin, and you will find that one way your answer is better than theirs. लोग करते हैं उल्टा, क्लास कर ली, फिर अक्षर से नकल मार के फिर उसमें मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, उससे कुछ नहीं होता। विजिबल डिफरेंस नजर आना चाहिए। अदरवाइज अभी जितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, अबाउट 2000 ऑफ देम, मेरा ख्याल है एटलीस्ट 800 to 900 विल बी राइट डिक्टो राइटिंग अक्षर। एनी आंसर इवन इफ इट इज ए मॉडल आंसर, यूपीएससी कंसीडर्ड इट एन एवरेज आंसर। तो आपका एडवांटेज तो वैसे ही खो गया, ठीक है। और दूसरा, जो बुक्स होती हैं जितनी भी है, जैसे वाष्पी है या अक्षत है या कोई भी है, जो पब्लिशर होता है वो तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता नहीं, वो डायग्राम्स का कबाड़ कर देते हैं। तो डायग्राम की एक्यूरेसी एट टाइम्स इट बिकम्स वेरी क्रूशियल, जो आपका फिर गड़बड़ हो जाता है। तो यू राइट एंड देन यू कंपेयर, कि टॉपर के आंसर से आपके आंसर बेहतर होने चाहिए, क्योंकि वो टॉपर 4 साल पुराना था। अगर आप इस साल एंथ्रोपोलॉजी मान लो कि 350 स्कोर करते हो, तो इसी तैयारी के अगले साल 325 भी नहीं आएंगे, इसी तैयारी के साथ उससे अगले साल 300 भी नहीं आएंगे, क्योंकि आप ही थोड़ी लिख रहे होंगे, सारे वही लिख रहे होंगे। तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इंटरव्यू में करेंगे ना, बता रहा हूँ, ब्यूरो के इसमें मैं पूछता रहता हूँ ना। पेपर 2 में जब हम अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी की बात करेंगे, ट्राइबल डेवलपमेंट की, आई शेयर द एक्सपीरियंसेस दैट माय स्टूडेंट्स हैव, और अच्छा कर रहे हैं वो लोग। पढ़न वो तो लिखने के बाद पता लगेगा तुम्हें। अगर मैं तुम्हें अभी कहूँ तुम्हें तैरना आता है, मेरे को सिखा सकते हो, सिखाओ। तो पानी चाहिए, तो वो भी आंसर की क्वालिटी के लिए लिखा हुआ आंसर चाहिए, उसके बिना नहीं होगा। अगर मैं कहूंगा कि इंट्रोड्यूस करो, कंक्लूड करो, बीच में डिबेट करो, डायग्राम बना दो, डायग्राम बना दो, उससे कैसे पता लगेगा, डिफरेंस कैसे आएगा, ठीक है ना। और क्या एवा, सर मुझे पूछना था कि हम लोग जब ऑनलाइन बैच जब ज्वाइन कर पूछना था तो वो तो था, अब तो इररेलेवेंट हो गया। सब पूछना है हाँ कि अब बोलो। कि जब हम लोग ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे बैच को, तो हम लोग का इंटरैक्टिव सेशन ही रहेंगे उसमें, मतलब रहेगी, ऐसे अनम्यूट करके वो हम। अंतिम सर एक बार फिर से बता देंगे आपको, वो सब रहेगा। ठीक है सर, वही पूछना था। We are correcting right now, but with adequate pauses. उसमें 10-10 बच्चों के ग्रुप बनते हैं जिनके साथ इंटरेक्शन किया जाता है, आंसर इवेल्युएशन भी होता है।
ये जो अभिन नारायण था, ये उस वक्त तो कोविड था, तो सारे ऑनलाइन लोग ही थे। जी सर। You say, Asif, sir, syllabus of paper 1 is vast. Can we do selective reading? If so, mention important topics. पेपर 1 में you have to practice something like about 100 answers, 120 answers, and in paper 2 about 80 answers. पेपर 1 देखने में ज्यादा बड़ा है, पर कितना बड़ा है आपको पता है कि जो आपका पेपर 2 है वो ज्योग्राफी का जो पहला टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी, उससे थोड़ा सा छोटा है। तो कितना बड़ा हुआ पेपर 2? पेपर 1 देखने में इसलिए बड़ा है बिकॉज एवरीथिंग इज स्पेसिफाइड, और कहीं कहीं तो वो 2 बार 3 बार 4 बार भी लिखा हुआ है। जब आप ये एनालिसिस सिलेबस का देखेंगे यू विल रियलाइज plenty of overlappings are there, plenty of outdated things are there. तो देखने में बड़ा है। आप जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज में देखते हो तो बॉटनी और एंथ्रो का सिलेबस साथ साथ होता है। बॉटनी का सिलेबस एंथ्रो से आधा लगता है, लेकिन जिसको बॉटनी आती है उसको पता होगा कि बॉटनी का सिलेबस एंथ्रो से कम 3 गुना है। तो पेपर 1 बड़ा होते हुए भी बहुत छोटा है, इतना छोटा भी नहीं है। हम लोग पूरा बीएससी और एमएससी प्रीवियस तक करते हैं उसको, पर हम उसको छोटा बना देते हैं। रीजन क्या है? जैसे फॉसिल एविडेंस का टॉपिक है, वी हैव अबाउट 95 क्वेश्चंस इन अवर एकेडमिक्स। यहाँ तो पूछते ही 5 या 6 हैं, हम उतना ही करते हैं। तीसरा प्रीहिस्टोरिक आर्कियोलॉजी है, अगेन वी हैव 85 प्लस क्वेश्चंस इन आर्कियोलॉजी, और यहाँ फिर हम वही 6-7 क्वेश्चंस करते हैं। तो बड़ा है भी और नहीं भी, पर जिस तरह से आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे उसी तरह से आपकी परफॉर्मेंस भी होगी। आपको आंसर लिखने हैं और लिख के याद करने हैं, बस ये ध्यान रखो। और अगर आपको आंसर नहीं लिखने हैं तो दुनिया भर की कोचिंग पढ़ी है, कहीं भी चले जाना, क्योंकि यहाँ आप आंसर नहीं लिखोगे तो फिर पंजाबी में गालियां पड़ेंगी, फिर मेरे को बुरा मत मानना। इफ यू थिंक यू कैन वर्क हार्ड एंड यू विल वर्क हार्ड, यू आर वेलकम। मैं तो चाहूंगा कि हर बच्चा फीस वापस लेके जाए। कई लोग होते हैं सर जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तभी तो आंसर लिखना शुरू करेंगे, और सिलेबस पूरा होने के बाद कभी भी टाइम नहीं होता। और जितना टाइम हम क्लासेस के दौरान इवैल्यूएशन के लिए देते हैं, लोग सोचते हैं कि क्लास के बाद, कोर्स खत्म होने के बाद जाएंगे तो इंडिविजुअली आंसर चेक हो जाएंगे। मैं अगर इंडिविजुअली आंसर चेक करूंगा तो मेरे को तो क्लास ऑफ करनी पड़ेगी, इतने सारे बच्चे आंसर चेक कराने वाले हो जाएंगे। सो यू हैव टू राइट ऑल दीज आंसर्स, इफ नॉट 4 months देन मैक्सिमम 5 months। कुछ अगर छूट गया है तो यू हैव टू प्रिपेयर। अगर आपको 5 महीने में एंथ्रो तैयार नहीं करना तो कोई भी दूसरा सब्जेक्ट ले लो या कोई भी दूसरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, मैं रिकमेंड भी कर दूंगा, फीस भी वो कम कर देंगे। और बोलो। Sir, again a question from YouTube. Puneet is asking, पुनीत, I am an engineering background. Is biology prerequisite for studying anthropology? पुनीत जी, इज बायोलॉजी प्री रिक्विजिट? तुम मेरे को ये बताओ, जितनी टॉपर्स की इंटरव्यू तुमने देखी हैं उनमें से कौन इंजीनियर नहीं है? तुम्हें अपने आप जवाब मिल जाएगा। सारे ही तो इंजीनियर हैं। और वैसे भी जो लोग कहते हैं ना हमने +2 तक बायो की थी, मैं शुरुआत इससे किया था कि तुम लोग जो कल पढ़ते हो वो आज भूल जाते हो यार। जो 6 साल पहले बायो पढ़ी थी कितनी याद होगी वो? फिर भी अगर डर लगता है तो हमारे चैनल पे यू हैव टर्मिनोलॉजी ऑफ एवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स, यू हैव टर्मिनोलॉजी ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल, यू हैव टर्मिनोलॉजी ऑफ स्केलेटन एंड डेफिनेशन ऑफ प्राइमेट। सारी टर्मिनोलॉजी अगर आ गई, जैसे आप में से इंजीनियर कौन कौन है? 5 थोड़े से तो हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं फिजिक्स तो सबको आती होगी। अगर आप, मैं कहूँ एक सेंटेंस में मुझे बताओ व्हाट इज इनर्शिया? स्टेट ऑफ, ये मोशन क्या होती है? ये रेस्ट क्या होता है? और मेरे को कुछ नहीं आता तो कैसे समझाओगे? यू विल टेल मी अबाउट द क्वांटिटीज स्केलर एंड वेक्टर, देन यू विल टेल मी अबाउट स्पीड, velocity, acceleration, then you will tell me the laws of motion, and then you can make me understand
एंड सेम थिंग इज ट्रू फॉर एवरी टेक्निकल थिंग। हर एक को समझने का एक तरीका होता है, बस उस तरीके पे चलो। टेक्निकल इश्यूज जो होते हैं देखने में लंबे होते हैं, लेकिन कंटेंट उसका एक्सप्रेस करने में कम होता है। पेपर 2 ट्राइबल इंडिया में जितना पढ़ना है उतना आपको बाकी 1.5 पेपर में नहीं पढ़ना। क्वेश्चन सिर्फ 25 बनते हैं, पर पढ़ना बहुत है। सो हाउ विल यू डिसाइड कि वो पेपर 1 लेंदी है कि पेपर 2 लेंदी है? और पेपर 2 में ट्राइबल प्रॉब्लम्स के आंसर कभी सही नहीं होते, अपनी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है ट्राइबल प्रॉब्लम से। Paper 1 is technical, and whenever things are technical, wherever you are either right or wrong, there is nothing in between. And when the issue is right or wrong, आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता। पेपर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव है। इवन इफ थिंग्स आर राइट और रॉन्ग, से फॉर एग्जांपल ट्राइबल प्रॉब्लम पे क्वेश्चन आ गया, आपको समझ नहीं आ रहा, आपने अपने घर की प्रॉब्लम लिख दी, किसी ट्राइब में तो होंगी ना। बट इन पेपर 2 you have to justify how much right you are never wrong। और जस्टिफाई जब करना पड़ता है तो फिर आपको राइटिंग स्किल भी चाहिए, आपको प्रूफ भी चाहिए, आपको केसेस भी चाहिए। आशीष? हाँ जी सर। सर मेरे 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं यूपीएससी के अंदर, और मेरे पास पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल रह चुका है। इतना पर बढ़िया सर सब्जेक्ट है यार। सर एक स्टैग्नेशन आ गया है नंबर्स पे, क्योंकि दो बार इंटरव्यू जा चुका हूँ सर मैं, पर नहीं, अगर वो स्टैग्नेशन 280 के आसपास है फिर तो ठीक है। सर 260 के आसपास आ रहा है स्टैग्नेशन। तो मैंने साल ड्रॉप लिया है, गैप ईयर लिया है। तो क्या अभी सही टाइम हुआ है ऑप्शनल चेंज करने के लिए, मतलब एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि सोशियोलॉजी में पढ़ के देखा, मुझे इतना इंटरेस्ट आया नहीं उसके अंदर। बैकग्राउंड क्या है? तो सर इंजीनियर, ट्रिपल आईटी ग्वालियर इंजीनियर देखो, सर, आईटी। इंजीनियर्स को मैं एक चीज वार्न करता हूँ कि सोशियोलॉजी और फिलोसफी, दीज आर प्योर सोशल साइंसेज। प्योर सोशल साइंसेज मीन्स दे डिमांड वेरी स्ट्रॉन्ग राइटिंग एक्सप्रेशन, इंजीनियर्स के पास नहीं होता। ठीक है ना? वैसे जो हाउ टू सेलेक्ट डॉक्टर में मैंने ये कहा है कि सारे हिंदुस्तान थोड़े थोड़े फिलोसफर होते हैं, थोड़े थोड़े साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो उनको ये 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन आईएएस बनने के बाद पढ़ते रहना ये सब्जेक्ट। फिलहाल तो जो सब्जेक्ट से पास हो सको वो वाले लो। तो सर अभी So सही if you रहेगा? drop and if you are sound in general studies, then definitely you should. हालांकि मैंने आज तक किसी को रिकमेंड किया नहीं, मैं आपको भी रिकमेंड नहीं कर रहा, यू कैन ट्राई। सर हाउ टू स्टार्ट विद एंथ्रोपोलॉजी, लाइक आपका अगला बैच जो होगा वो 1 तारीख से, या तो मतलब आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 16 तारीख से स्टार्ट होगा वो बैच? नहीं बता, वही तो बताया ना, 22 से होगा भाई। मेरे को वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाना है, इसलिए मैं थोड़ा तो सर अभी डिले। क्या करना चाहिए अभी, मतलब अगर मुझे थोड़ा अभी जीएस को फिंगर टिप्स पे करो। जीएस में कितना आता है ये बताओ? सर 405 406। जीएस में कौन कौन सी चीज आती है तुम्हें? सर ज्योग्राफी थोड़ी ठीक है मेरी। पूछो। सर ट्राई, मतलब अभी सबसे आसान सवाल, व्हाट इज ज्योग्राफी? चलो कोई भी बताए, इससे आसान तो नहीं हो सकता ना। सर द स्टडी ऑफ अर्थ इज वो ज्योग्राफी। तो जियोलॉजी भी है। सर दैट द थिंग आई, यस सर। ऐसे थोड़ी होता है। सी, ज्योग्राफी इज एट द कोर ऑफ योर जनरल स्टडीज। अगर आपका ज्योग्राफी स्ट्रांग है, इट मींस 1/3 जीएस आपका कवर हो जाता है। ज्योग्राफी का ग्रिप है तो इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर, क्लाइमेट, ये तीनों आपकी ग्रिप में बड़ी जल्दी आ जाते हैं। इकोनॉमिक्स में फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी को छोड़ के बाकी सारी इकोनॉमी उसमें आ जाती है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो ट्रेड, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन प्लानिंग, रिसोर्सेज, ये सारा इकोनॉमिक्स में होता है। यस सर। कुछ चीजें हिस्ट्री की भी ज्योग्राफी से रिलेटेड आ जाती हैं। एक पॉलिटी एक अलग है। यस सर। और पॉलिटी पढ़ने से पहले मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि राज्यसभा टीवी की एक सीरीज है द मेकिंग ऑफ संविधान, जब तक वो नहीं पढ़ा आपको पॉलिटी नहीं आती। मुझे नहीं मालूम कि सारे इंस्टीट्यूट आप लोगों को क्यों नहीं बताते कि वो जो है दैट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। तो इफ यू हैव ए ग्रिप देन डेफिनेटली 260 तो खैर कोई स्कोर नहीं हुआ। One from YouTube. It's regarding the video you posted last.
Sir, from Indra Naha. Indra Nana? Naha. Naha. Okay. Sir, you said in your last video about answer writing scam of coaching industry. You also referred Satyam Jain. So I want to ask how to do self-evaluation in GS and नहीं नहीं, देखो वो सत्यम जैन की वीडियो मेरे किसी स्टूडेंट ने भेजी थी और इंसिस्ट किया था कि मैं उसको जरूर देखूं। मैंने देखा तो मुझे पहली बार लगा कि कोई भी बंदा जो है वो सही से मन की बात कर रहा है। बहुत सारी बातें जो उसने कही थी वो मेरी बातों से मिलती थी। मैंने रिकमेंड नहीं किया किसी को, किसी भी कोचिंग को, क्योंकि एक चीज मैं बताऊं, अगर आप स्टूडेंट्स का एक लिमिट रखते हैं, जो नए नए इंस्टीट्यूट होते हैं ज्यादातर बच्चे उधर भागते हैं क्योंकि उनको लगता है यार उनके पास 15 बच्चे हैं, पूरा अटेंशन देते हैं। अगले साल वही इंस्टीट्यूट में 150 हो जाते हैं और उनका एटीट्यूड बदल जाता है। ये जो है एक इंडस्ट्री हो चुकी है। मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, आप प्रोफेशनलिज्म चाहिए, आप रिजल्ट देंगे तो बच्चे तो अपने आप भागेंगे आपके पीछे। आपने उसको बिजनेस बना दिया है, ये पंगा हो गया। ठीक है, और पैसा किसको नहीं चाहिए भाई, लेकिन कितना चाहिए और उसकी यूटिलिटी क्या है वो तो अपनी अपनी सोच होती है ना भाई। So the query here was how to do self-evaluation for these. सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ इवैल्यूएशन तो नहीं हो पाएगा। जो हमारे बच्चे होते हैं, जो लोग प्रीलिम क्वालिफाई कर जाते हैं, उनको मैं कहता हूँ कि कहीं कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट दिया है तो एक एक टेस्ट लेके आओ, तो मैं बता दूं कि यूपीएससी का इवैल्यूएशन किस तरह से होता है, तो लोग समझ जाते हैं वो प्रीलिम्स पास होने के बाद। क्योंकि कंटेंट आप लोगों को पता है, एक छोटे सा आपको हिंट चाहिए खाली अपना ओरिएंटेशन के लिए और बड़ी जल्दी अडेप्ट कर जाते हैं लोग, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज इस तरह से अगर हम करने लगे बताए फिर वो इतना बर्डन हो जाएगा, तो और मैं कोई चीज कमिट कर दूं और फिर मैं ना कर पाऊं और फिर बदनाम होना बड़ा आसान होता है। ठीक है ना, जब आप प्रीलिम क्वालिफाई कर जाएंगे तब बताना मेरे को। क्वेश्चन फ्रॉम संजीव वर्मा सर, बीपीएससी एंथ्रोपोलॉजी की स्ट्रैटेजी बताइए। संजीव, अभी बीपीएससी का तो समय नहीं है अभी है, और यूपीएससी की स्ट्रेटेजी जो है वो हाथी के पैर में सबका पैर होता है भाई। वही जेएंडके में काम आती है, वही वही बीपीएससी में काम आती है, वही जहाँ जहाँ ऑप्शनल है सब जगह काम आती है। Asking about its main objective. The optional is अभी बीपीएससी में तो क्वालिफाइंग हो गया अब यार, उसमें क्या प्रॉब्लम है। और ऑप्शनल का क्वालिफाइंग होना मतलब शर्मनाक बात है किसी भी स्टेट सर्विस के लिए। रखा किस लिए उसको, अगर उसको क्वालिफाइंग ही करना था ऑप्शनल को तो। on Zoom sir. डन। अंतिम सर फिर से आपको बता देंगे वो क्या मैकेनिज्म होगा आंसर राइटिंग का। हाँ प्राची बोलो। गुड इवनिंग सर। सर मेरा Yes. एक क्वेश्चन था कि क्या हम जीएस से पहले ऑप्शनल प्रिपेयर हमें करना चाहिए। अभी मैंने जीएस ज्यादा नहीं किया है, पर मुझे ये था कि अगर मैं अपना ऑप्शनल एक सेफर जोन पे पहले कर लूं तो एक वो सेंस ऑफ जीएस की कोचिंग कर रही हो क्या? नहीं सर। कब से शुरू किया तैयारी? सर अभी मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है इस ईयर, तो फ्रॉम हाँ। अ मंथ और सो मैंने अपनी बेसिक्स मतलब शुरू की है पढ़ना। कर सकती हो ऑप्शनल की तैयारी। एक्चुअली तैयारी तो दोनों की करनी है ना भाई, एग्जाम तो पूरा ही होना है ना। हाँ जी मैं बताओ तो मैं एंथ्रो में ले आओ 330 नंबर, पर जीएस में 350 ही रह जाएं फिर भी, तो क्या फायदा होगा वो 330 आने का। यू नीड ओवरऑल प्रिपरेशन। डेफिनेटली ऑप्शनल इज गोइंग टू मैटर ए लॉट फॉर योर सक्सेस, पर दोनों की करनी है, किसी को भी पहले कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर ऑप्शनल जीएस थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, देन यू विल रियलाइज हाउ मच ऑप्शनल कैन बी ऑफ हेल्प इन योर जनरल स्टडीज। जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, हम इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, हाउ टू यूज इट। तुम पॉलिटी पढ़ते हो, हम पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं। तुम सोशल इश्यूज पढ़ते हो, हम जीएस पेपर 2 के पार्ट 1 में, और सोशल कल्चरल इश्यूज जो हैं मैरिज फैमिली किनशिप वगैरह, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दीज थिंग्स अगर थोड़ा सा जीएस पहले से पढ़ा हो तो। पर अलग अलग है, वो एक बार अक्षर ने कह दिया कि मैंने पहले ऑप्शनल किया था तो सारे दौड़ पड़े कि भाई पहले ऑप्शनल करो, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि
4th ईयर में उसने पूरी जीएस तैयार की थी पहले, प्रीलिम दिया था 4th ईयर के बाद, 2 मार्क्स से फेल हो गया था, फिर एंथ्रो की तैयारी की थी उसने। और आप लोगों को इतना ही सुनाई देता है कि पहले ऑप्शनल तैयार किया था मैंने। सर एक पहली बार पढ़ रहा है क्वेश्चन, डीमेरिट्स ऑफ टेकिंग एंथ्रो एज ऑप्शन। विपिन इधर। यार मेरे को तो मेरिट्स भी नहीं पता, तुम डिमेरिट्स पूछ रहे हो, है ना। एंथ्रोपोलॉजी इज नॉट एन ऑप्शनल, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। Job of anthropology is not only to make you an IS, its job is to make you better humans. आप जब रहोगे 4 महीने, after that if you look back, you will realize how much you have changed, not only in thought, even in terms of your action. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एंथ्रो का है कि ये आदमी को बदल देता है, अच्छा है या बुरा है पता नहीं, ठीक है। और अगर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो उसका सबसे बड़ा डिमेरिट है कि मुझे झेलना पड़ेगा 4 महीने। और मेरे को गुस्सा बड़ी जल्दी आता है और मैं बहाना बना लेता हूँ कि बूढ़ा हो गया हूँ इसलिए गुस्सा आ जाता है, आप लोगों को बियर करना पड़ता है। वो तो मैं एक ग्रंथ लिख दूँ उसके ऊपर, फिर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा पूरा वो डिमेरिट ऑफ एंथ्रो के लिए। सबसे बड़ा डिमेरिट है कि इसका नाम ही नहीं लोगों को पता होता। व्हेन यू पीपल गो फॉर एन ऑप्शनल, आपने एंथ्रोपोलॉजी का नाम तक नहीं सुना होता, तो ये डिमेरिट नहीं है कि लोग जानते ही नहीं है सब्जेक्ट के बारे में। चलिए, जो भी करो मन से करो, ठीक है। अगर आपको आना है यहाँ तो यू आर वेलकम, इट इज योर करियर, यू हैव टू डिसाइड, ठीक है। लेकिन अगर आपको मेहनत करनी है राइट फ्रॉम डे 1, देन ओनली यू शुड डिसाइड। लेकिन आओ चाहे ना आओ, मेरी ये राय जरूर मान लेना कि यूपीएससी 2 बार ही देना है, पहली बार पूरी तैयारी के साथ, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। अंतिम सर फिर से आपसे ब्रीफ करेंगे। अच्छा, नहीं नहीं, तो टोटल में इसको पूरा चिट्ठी में दिखाना है। okay. Uh, this is the book published by Sir very recently, The Truth About Caste and Other Essays. It's available from Garuda Prakashan, and also there is a student copy, that is student edition, that is available, and you can buy it. The link will be made available in the YouTube description. Here are the misconceptions about caste that has been there over the decades, I'll say, not centuries, are tried to address. So Sir has tried. Like there is a very common assumption among people who claim to be victim of caste, is that, not claim, who are victim of caste discrimination, that they blame it on Manu Smriti. So here there's an entire chapter on Manu Smriti that says, entire essay, that tells you that how the Manu Smriti has been wrongly interpreted, and how what was intended was totally scrambled by the colonial British past, and to make us self-loathe. So to my friends on YouTube, I suggest you join us on Zoom call, and we can have a better interaction. The details of the Zoom meeting are made available in the comment, in the live chat. You can do that. Now, first I'll just repeat the formal details and then we can interact. Okay.
Before that, someone was asking about self-evaluation of answers. Although what sir said is very right, but I have one thing to add, perhaps that will benefit you, is that these days toppers are making their channels on Telegram. Huh? And it is a little trouble to, honestly, to find the authentic channel. But once you find it, you will have their genuine answer copy. What you see available in old time and on different IAS blogs and all, they are not trustworthy at all. You know, such a good handwriting, writing a test is never possible. So if you are able to locate it, then from there you can have a comparison and try for some self-evaluation. Huh? And I'll remember and again. So about the batch starting from August, like sir said, the decided date was 17th August, but we pushed it to 22nd August since we are having a World Anthropology Conference in Bhubaneswar, organized by Kalinga Institute, hosted jointly by Kalinga Institute of Social Sciences, and it will be excuse me. It will be from 9 to 14th August. And post that, sir has decided to do some field work in that particular region. So he pushed the batch to 22nd. Okay. The admissions will start from 1st of August. The registration are beginning at 8 a.m. sharp. And you have to visit our website, vaidsics.com, and register there. If you are looking to join offline batch, make sure that you register on time because there is a rush for offline. Online itna nahi, but offline it is there. Okay. So when you are registering, you will be asked for some personal details, your name, phone number, email address, permanent address, etc. And fill it there. After that, you will be asked to pay a registration fee for 2,000 rupees. And that will be adjusted in your full fee payment, but it is non-refundable. We have to knowingly do this because earlier people were just trying to block the seats. Some anti-powers, I'll say. No further comments. They don't deserve. Anyway, so you pay that 2,000 rupees. Now the process is a little different for online and offline people. The people who wish to join offline, they'll be given a date and time slot at which they have to visit the institute and complete admission formality. Okay. When you are coming for admission, make sure that you bring 2 passport size photographs, and then you get a photocopy of one government ID, preferably one with your permanent address, DL or Aadhaar or voter. Okay? That you get. And the fee you can pay by cash, check, or online transfer, and UPI. Card facility is not available, though I doubt anyone uses it till now since UPI. And one thing I usually query I get from students that I am traveling from out of Delhi, and how do I do that? So if you are doing, if you are traveling from out of Delhi and you get a time slot that is not in your comfort, then you can call me and we can reschedule. My number is there. 953-800-1600. So any queries that you have, you may also ask me that in person if you wish to. For students who wish to join online, we'll have next 3 days after they register for making complete payment of the fee. And for fee for online is 52,000 and fee for offline is 59,000. Okay. Now about online classes, people do have some queries, so I'll just elaborate a little. That first, classes will be live only, and will be conducted on our app, Vaids ICS, the IAS Lifeline, for this Android and iOS mobile and tablet devices, not for PCs or TVs and whatever you have other things. Okay. The classes will be live. If
due to any reason you miss, the replay for the classes will be held on Sunday, just like you have a replay of a match. The classes schedule will be Tuesday, Thursday, Saturday, that is alternate days, and the timing will be 2 to 4. Rather, I'll say 4:30. Okay. And about the study material, it will get couriered to you after 1 week of classes is complete. For the first 2 weeks, the source for your course will be Vaids' book, Socio-Cultural Anthropology in Search of Ourselves. Okay, so you refer to that, and we'll be starting with chapter 4, marriage. First 3 chapters I recommend you skip for now. That will only confuse you. Okay? So I suggest if you have access to that book, and if you are sure that you wish to join, you buy that book. And along with Ember and Ember. Ember and Ember 15th edition is available. If you have, so we from batches to start, you have close to 40 days, 35, 40 days. So I suggest that you take these books. Ember and Ember, you should just give a casual reading. Okay, you are not required to make any notes. If you are too much hell bent on making notes, then there are updates in the boxes. In the book Ember and Ember, you will find updates in the boxes, and those boxes dated later than 2015. You can note them down. That will be helpful for writing answers. Other than that, you need not write anything. Just give a casual reading, just like you read a novel. The reason I'm asking you is that the subject is new for you, and this will help you get acquainted with the subject. Okay. And second is search book. Chapter 4 to 9, I suggest you give a thorough reading here. When I'm saying thorough, there are 2 or 3 definitions there that I expect you to remember, and at least few of the example, if not all. Okay. You'll be starting with chapter 4, marriage. And the reason why I'm telling you this is that there is a rule of class. You will be always knowing the topic in advance. The topic that is to be covered, you will be knowing in advance, and you have to read the topic once and come. The class will start with any doubts. Third, and I share a list of questions in beginning of every section, and you are supposed to write answers for them as a group when whenever the topic gets covered in the class. So after the class, what we suggest is that you should sit here for offline case, and in online you should just sit at your table chair and immediately revise. Don't take a break of more than 5 minutes. When the things are fresh in your mind, writing answers is a lot easy. If you write answers for the topic covered in the class just after the class, and let's say you take some 30 minutes to write the answer. If you delay it by 1 day, that will be 40-45 minutes. If you delay it further, the time will keep on increasing, multiplying. Okay. It's advised you do it then and there. You write the answer, get it discussed with your group, take the feedback, improvise, then again you show it to counselors or me, then take the feedback, improvise. Now, when you're going through so many iterations, you are able to memorize the answers. But there is a process that has been, there is a lot of thought that has been put into this process. So that will help you. And for online people, the same thing is there. Just that the answer evaluation will be on video conferencing. Or we take a recording of the answers and pointing out whatever the issues are and send it to you on WhatsApp, whatever is feasible. Okay. There is one thing that I forgot to mention earlier, that when you join us for the classroom course, we are there with you till you qualify. That means support for answer writing, test series, everything will continue even after your batch is over. If you wish to repeat the classes, generally engineers, they have a mental block towards physical portion, so they request for that. So if you wish to attend the classes again in any upcoming batch, you are allowed to do that without any additional charges. Okay. So that way you stay connected over WhatsApp group with us.
I have people from previous batches, even 2018, 2019, that are still connected to us and even visiting us, the library daily. Okay. So this is a brief. Puchara? Current affairs. So we share our current affairs in our WhatsApp group, and there has always been a demand from students who are not able to join. So for that, we started our Telegram channel, Vaids ICS official, and you can join that and see the current affairs there. That is the most exclusive coverage from mains point of view, from 10 newspapers, and I doubt anyone is doing this broader coverage. Okay. So what is the deadline for registration for? The seats are limited. So once the seats are full, the registration ends. And social issues. I can't attend 8 a.m. batch. 8 a.m. batch is not there, sir. The August batch is 2 to 4:30 p.m. Okay. So I have given you a brief. You are welcome to ask any questions that you, any queries that you are having. यार टॉपर्स नोट्स रेफर करना चाहिए. अगर तुम्हारे खुद आंसर लिखने की मेहनत करने की इच्छा नहीं है तो करो. I'll just give you an example. You take one answer, definition of marriage, from Sachin Gupta's notes, from Akshay Jain books, from Narayana Mit notes. You see how changes are there. The reason is that the anthropology itself is a huge ocean, but to qualify for UPSC, you just need a couple of buckets. So we add some or other thing every year. So that way, the answer that you will write, you will and finalize by sir. Then you compare it with any of these answers, you will find that you have done a better job. So you got the answer. थोड़ा सा जोर से. Right. Sure. Standard books, yeah, देखो, there are hierarchy. Books get updated less frequently. Class notes are totally up to date. Class notes has to be the ground for your answer. After that, you take reference from them. So when you're writing answer, you are not taking, मतलब don't do it कि time bound manner में करना है कि 7 मिनट में लिखना है 10 मार्क्स का आंसर. नहीं, take ample of your time, put all the sources in front of you, and then you write the answer. That is the way you say. Okay. देखो कई बार लोग पूछते हैं कि ऐसे क्यों करना है. The reason for that is none of you have given any exam more than 100 marks. Mostly now it has been 70 marks likely, na? Engineers it is 70, I know, and DU also is making like that. So this 250 marks paper, you will never be able to complete if you have not crammed up the answers. So let us say that the answers that you have prepared, and they are, let's say they cover 75% of your questions on the question paper. Then if you are memorized them by heart, you will have more time for the remaining 25% to think, to prepare a better answer. So that is why we do this. We prepare model answers, we encourage you to memorize them. That's the way. And when you're preparing model answers, there is no time limit. You should take ample of time. The first answer that I am saying, definition of marriage, that will pretty much be dictated to you. Still, you will take 1 hour to write that answer. Okay. So this will happen. There is a curve that we follow. There is some hand holding in the beginning, and slowly and slowly you will start running. Okay. From online people or anybody in the class, any further question? यार देखो ऐसा है, स्टडी मटेरियल भी अपडेट होता है ना, इट हैज टू बी प्रिंटेड. तो क्लास नोट सबसे ज्यादा अपडेटेड होंगे. एंड स्टडी मटेरियल, हाँ, that's what I'm saying. And study material also takes time to get updated. Second is, there are certain ways the study material has to be written. Like
what you teach in class and the way you write it in a book or study material are different. You can put some chat a little. Obviously, you can't put everything in the study material also. Like तुम्हें जैसे अभी सर ने इसकी physical की बात की थी. The basic terminology you cannot put in the study material. So that has to be explained in the class. Obviously, difference will be there. Anybody else? Anything you wish to ask? Now the dash is totally open. Hello, sir. Am I audible? हाँ जी, सयन पाल. सर मैंने आपको कॉल किया था पहले. असल में सर मैं जून जो बैच है उसका मैं स्टूडेंट हूँ. तो मेरा जीएस का जो बैच चल रहा है वो मर्ज होता जा रहा है. तो इसलिए मैंने आपको कॉल किया था पहले बैच चेंज करने के लिए अगस्त में. तो आपने बताया था एक रिमाइंडर देने के लिए एट द एंड ऑफ द जुलाई. तो Why are you doing it in a public session यार? Personally call कर देता. sorry sir, but you just said That's that fine. You just you give can me a send it call. to me. Okay sir, okay sir, okay sir, thank you. Anything else if you would like to ask regarding UPSC, anthropology, joining the syllabus, joining the batch, sorry. Sir, can you again repeat about the anthro current part? How can we get it? I didn't get you. Please repeat, Ankit. The current affairs part of anthropology. Current affairs part. Yeah. देखो, every day new researches are coming up. Okay, I say that socio-cultural part is pretty much static, but still some or other change you can always put. Okay, and the current affairs is shared by us. अगर हम नहीं करेंगे, that's our job, यार. So if there is anything that in the news that is specific to current affairs for anthropology, Vaids highlights it as a marker and shares it in the groups. That way you will keep yourself updated. कुछ वीडियोस हैं टर्मिनोलॉजी को लेकर. द क्वेश्चन इज दैट हाउ टू अप्रोच फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी फॉर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. सबसे पहली बात, यू शुड रिस्ट्रिक्ट, यू शुड नॉट थिंक कि आई एम डूइंग सम रॉकेट साइंस. ठीक है, कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आपको पढ़नी है. लाइक सेल डिविजन इज देयर, सेल स्ट्रक्चर इज देयर, mitosis, meiosis, all these. If you are getting those basic things, then it's doable. I myself have my graduation in engineering only. ठीक है, कितनी देर लगती है एक स्कल बनाने में? How much time do you think? Guess, random guess. Skull. 10 seconds. Forehead. Yeah, depression for eyes, depression for nose. Your teeth, your chin, your zygomatic, frontal, temporal, occipital, eye. Done. Practice will get you there. Again, you see those stone tool diagrams. ना कि क्या बना रखा है यार? How do you do that? This is a tool. You should know the process, how it's done. So you hit it with another stone and chip off a piece. Then another piece. Then another piece. Then another piece. This is your index. देख के बड़ा complicated लगता है, but when you know the process, that's quite easy. Okay. So just make sure that you reach out. Don't try and start thinking कि मैं पहले खुद करूँ. That is the most common mistake that people do. यार थोड़ा सा और effort लगाता हूँ, then I'll ask. यार, we are here to help you. We have quite some experience. अच्छा नहीं है कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है पहले किसी को नहीं आई होगी. Do that. Answer? Archita, please. Yes, sir. I was asking that when will the registration start? Registration are starting on 1st August at 8 a.m. Okay. Okay. Any further question, my guy, my friend? And sir, the fees will be paid after the registration, right?
Yeah, so when you are registering, you have to pay a registration fee of 2,000. After that, the process is a little different for online and offline. Okay. For online, you will get next 3 days to complete the fee payment on the website itself. For offline, you will be given a date and time slot at which you have to visit the institute and complete admission formalities. Okay, thank you, sir. Hello, sir. Yes. So for online students, if anyone misses the class, will there be any recording available or only the replay sessions? If you miss any class, first of all, you should not miss the class here. Why you should? Anyway, if you miss the class, you will get the replay on Sunday, the replay of 3 classes of the week. And the duration is around 5 hours or so with adequate breaks, obviously. And you can watch it there. And if still a need is there, we can schedule another replay. Like sir says, the institute is not run by us, it's run by you guys. So whenever you feel a need, you can just ask it and it can be done. When physical is going on and people feel overloaded, they just ask for a leave and they are given. If you are not able to complete your answers up to pace with the batch, then what good is the batch for? So we have breaks if you need that. Is it? Thank you. Sure. Okay. So once you have taken the admission, you will be added to a WhatsApp group, and the WhatsApp group will be created by 6th of August. Okay. If you are not added to the WhatsApp group by 6th of August, you can call me on 7th morning to make sure you get added and everything. And there was one guy who was asking on YouTube if I am an offline student and I join online, then how should I? No, if I'm an offline student and due to some reason I wish to attend online, yeah, you can do for a couple of classes. But if you make it a habit, you will be automatically switched to online. Okay. Shamayita. Yes, Very sir. interesting name, यार. क्या मतलब होता है इसका? So it means someone who does not allow the evil to grow. कुछ Yeah. इसका mythological है root? I'm not sure, sir. You should be. देखो यूनिक नाम होने का ये फायदा है कि इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन ही होगा. एंड अगर आप इंटरव्यूअर को ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देते हो फ्रॉम योर नेम, फ्रॉम योर बैकग्राउंड, फ्रॉम योर हॉबीज, देन दे विल जंप इनटू द academic part, and those people are pandits. ठीक है ना? Almost vice chancellor level people and what not. तो उनको आप academics में नहीं beat कर सकते. It's better you prepare these. I'll ask my parents. Yeah. So my question was, if we take classes in online mode and later, can it be changed to offline mode, provided the required fees adjustments have been done? Yeah, can be done. That can be done. Okay. Depends on obviously the seats in the class, but yeah, can be done. Got it. And my second question is, like, I wanted a clarification from you if the classes would be available in laptop or is it like only the mobile app from where we can access it? Only mobile and tablets. If you have no issue with the small screen size, then you get a tablet. Quite some cheap options are available. आज तो शायद Amazon की सेल भी चल रही है. Got it. Okay. And also in tablets also, is it like normal Android tablet or iPad may it's available? Android, iOS, anything. Okay. Thank you, sir. Not Windows tablets. Sure. हाँ जी, वैष्णवी. Good afternoon, sir. So I had one doubt. I'm working right now, Monday to Friday. Since there are no weekend batches, do you have any suggestions how I can balance classes with? Is it public sector or private? Private, sir. देखो, UPSC itself is a full-time job. When you are saying you have a 9 to 5 job, 8 hours are gone there. And when you are having your anthropology classes, we expect you to give 5 hours at least daily to anthropology. That becomes almost impossible.
So I'll be quitting in 2 months, but I just, because the batch is starting and I have to complete the syllabus before this year. This So is in your notice period, you don't have to serve, na? 2 बजे छोड़ देना office और क्या? But sir, the timings are clashing. Like 9 AM wala bhi nahi ho payega, 2 baje wala That's bhi. what I'm saying. कि 9 to 1:30 you put the job and then you go home and attend the class. Okay, sir. Got it. Thank you. Chalo. Mandeep, hi sir, is there only 3 classes per week? Yes sir, 3 classes per week. The idea is to help you prepare. ठीक है ना? अगर ज्ञान बांटना है तो दुनिया जहान की वीडियोस है. That is not what UPSC is looking for. UPSC is looking for your skills, your analysis. अब UPSC को हम प्यार से IAS का एग्जाम कहते हैं, राइट? एंड एक IAS के अंदर एम्पल ऑफ स्टाफ इज देयर. 100 लोग तो कम से कम यूजुअली रहते हैं. एनी फैक्ट दैट यू नीड, तुम चुटकी बजाओ, पीपल विल बी देयर. सर हियर आर ऑल द फैक्ट्स. But when you are at an IAS level, at a collector level, your analysis is what makes you the collector, the DM or जो भी post. Okay? So you should focus on that. What will be the right time to call you? If it's a quick doubt, call me anytime. But if you feel the conversation will be longer than 10 minutes, I prefer you call me after 7:30 in the evening. Utkarsh, sir, offline students are getting access to recorded lectures. Recordings of lectures are available at institute in form of tablet. Tablet will have recording, but you can watch there. Sit in the institute and watch. Otherwise, online access is there for offline students as well. Okay. So if that is all, I have already shared my number with you. I will share it again. It's 953-800-1600. You can call me to get your queries addressed. And I wish you very best for your preparation. Have a good day.